Good afternoon, everyone. Once again, we are getting opportunity to welcome Himanshu Gupta. The name does not need any introduction. Mainly from the aspirants of philosophy. And as I assured you that whenever he will come back to India, I will introduce him. So I will not take much time. This is over to Himanshu. Thank you, sir. Hello. Good afternoon, everyone. Hi. So I am here just to talk to you about how you can go about this exam, and if you have any other questions about maybe about the service, because I am in Indian Foreign Service, most of the people might not be aware of the service also. So अगर उसके बारे में भी कोई questions कुछ ऐसा हो तो you can ask me definitely. और philosophy optional के regarding particular any particular doubts, any questions, kaise how to go about this exam. Any of you have seen the previous video that I had uh, talked about, I think 2019 के बाद ही तभी करा था. उसमें भी I had covered it quite comprehensively, क्या कहाँ से कैसे मैंने कैसे करा, and what all sources I covered everything. So if you have any doubts regarding those sources also, I think I have that PPT here, that old PPT. वो है क्या old PPT? उसमें sources no, PPT is not there. PPT नहीं है ना? No issues. So that video had all the sources from part A में कैसे करना है, western में, Indian में, socio political में, what all sources you can cover or what I try to cover, and my notes also, all the notes I had uploaded, scanned करके. But one thing that I should clear or clarify that वो कई सारे उसमें parts हैं, कई resources हैं which I did cover to cover. This is, it's not that कि first line से last line मैंने सब कुछ लिख दिया. This is very important to understand that you cannot internalize each and every line from every जितना भी वो resources है. If you take any particular, ये पता नहीं, these are like 200, 300, 300 pages each. तो इतना nobody can do that. But yeah, उसमें से extract करना is the main skill. If you can extract out this particular line, this particular keyword important, उसको highlight करके वो कर लो. Because the main problem that I was facing was how to consolidate everything. वो ना सिंगल पेज नोट्स बना लो, 2 पेज में नोट्स बना लो, सब कुछ वो कर लो. आई ट्राइड डूइंग दैट, बट उसके बाद 1 महीने बाद एक और रिसोर्स आ जाता था, एक और अच्छा कुछ मिल जाता था कि यार यहाँ से तो अच्छा है ज़्यादा मटेरियल, देन उसको स्टेपल मार के लगा लो, देन उसको साइड में लिख लो. दिस इज द आई थिंक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थिंक सबको आ रही होगी कि how to actually consolidate everything, all the resources from different parts, websites, coaching institutes, this that, सारा मटेरियल बुक्स वगैरह का कैसे एक जगह कंसोलिडेट करके एंड देन यू ट्राई टू राइट द आंसर. सो वो उसके लिए माय सॉल्यूशन वाज डोंट ट्राई टू कंपाइल बिकॉज दैट्स क्वाइट अ क्लरिकल वर्क. एक साथ लगा दो पेजेस पे पेजेस, स्टेपल मारो एंड देन हाईलाइट देम बाय डिफरेंट कलर, डिफरेंट पेन्स, और उसमें फिर उसको पेज पलटते रहो. सो आई स्टिल रिमेम्बर within that 2 hours I could take those two folders, सोशो पॉलिटिकल और रिलीजन का, यही पर्टिकुलर मटेरियल है सारा स्कैन, और मैंने जल्दी जल्दी पलट के पेज पलट के आई जस्ट फिनिश देम ऑफ. ऐसा नहीं है कि दैट आई रेड ईच एंड एवरीथिंग, बट आई न्यू कौन सी चीज़ कहाँ पर है. इट वाज जस्ट फाइनल रिविजन, सो आई जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड जस्ट सी कहाँ क्या था, एंड अगर कहीं कुछ ऐसा ध्यान आता है, ओ दिस थिंग आई नीड टू रिवाइज वंस अगेन, आई जस्ट लुक दैट. तो इतना करने धीरे 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 करके आप उस स्पीड पे पहुंच जाओगे दैट योर रिवीजन इज दैट फास्ट. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से कि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट चीज टू clarify because lot of people had been asking me questions even after that session online, कहीं से टेलीग्राम से कांटेक्ट करके या ईमेल करके. सो मेजर उनका क्वेश्चन यही होता था कि हाउ डू यू कंसोलिडेट एवरीथिंग.
That was my answer about consolidating. Any particular question you guys have? Anything related to philosophy optional? How to go about anything before prelims? It can be important. Attempting a test series before prelims. It's just a way to uh, प्रीलिम से पहले मैं ये कहूँगा इट्स जस्ट अ वे टू जस्ट मेमोराइज कि एक बार तुम्हारा सेट हो गया है कि तुमने प्रीलिम से पहले भी एक बार आंसर राइटिंग करके देख लिया बट मेजर फोकस ऑफ आंसर राइटिंग शुड बी जस्ट आप जब प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में एंड आई थिंक द गोल्डन टाइम पीरियड वो होगा जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स. So just after prelims, as soon as you give the prelims, according to me, those let's say there are 70 days up to 70 हो गए ना, 75 होते हैं. So you can maybe divide it in half. First 35 days, 80% आप ऑप्शनल पे फोकस करो, 20% जाना तो चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा करने दो. Repeat. Okay, that's good. ठीक है. So 80% if you focus on optional during that time, उसमें आप आंसर राइटिंग करिए, उसमें आप टेस्ट सीरीज करिए. That's much more beneficial because एक recency वाला होता है कि if you have recently written something, it's much more beneficial. But if you are giving it before prelims, तो ये होगा कि आपके पास कुछ ready at hand वाली चीज़ होगी कि एक है साथ में आपके which you can just take out और कभी कभार अपने पुराने answers if you just refer back, so you will get a lot of new things out of that कि अरे मैंने पहले ऐसे आंसर लिखता था, now I am writing it differently, how is it different from the previous one. उतना मुझे लगता है, बाकी as such बहुत ज़्यादा difference तो नहीं वो होगा prelims से पहले. If you are able to cover up your syllabus before prelims, test series time है, क्या दिक्कत है, करो. Right. Yes. Did you revise after prelims and mains? Like between prelims and mains? Number of times though I can't exactly say, but it's not that full on revision. Like let's say paper 1 to लेके paper 2 सारे topics if I from A to Z पूरा पूरा रिवीजन तो ऐसे आई कांट से 4 5 हो गया होगा, 6 हो गया होगा एट मैक्स. बट इट्स लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स इफ यू आस्क. लेट्स से मैंने वो इंडियन फिलोसफी में सूत्रास जो होता है उसका मैंने एक कंपैरिजन बना लिया था, उसको मैंने शायद 25 30 मे बी 40 टाइम्स आल्सो आई वुड हैव रिवाइज्ड. तो कुछ नहीं है, 2 पेजेस हैं राइट, 2 पेजेस एवरी डे मॉर्निंग एक बार देख लो, 2 बार. आई हैड मेड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ माय ओन वॉइस, तो वो मैं सुनता रहता था, उसको 2x पे चला के सुन लिया, 10 मिनट का काम है. सो दैट इफ यू ऑल्सो काउंट दैट एज रिविजन एंड 5 टाइम्स गुड रिविजन आर इनफ. And so, if I put like marks in paper, like one something, so which one? Paper like both papers In paper, in paper paper 1. 2 and paper. See, marks though I can't say because every year it also varies. Like in my 2019, I got 287 marks, but I think the previous like every optional in my time 2019 it was very difficult because every particular option was scaled down to some extent. At least हम लोग तो ये बात करते हैं कि -50 पूरे के पूरे ऑप्शनल. बट since it is relative, it's a competitive exam, आप -70 -100 भी कर दोगे, it doesn't make a difference, right? So अब आगे साल में भी ऐसे ही हो रहा है. If you see the previous year 2018 2017 उसमें लोगों के 300 टच कर रहे थे बहुत आराम से, right? And now this paper which I happened recently, मुझे लगता है this is शायद बस है. So it will depend. So if you ask me कि इतने मार्क्स सही है कि नहीं है, it depends on the particular year also. So I can't actually say सही है कि नहीं. Try to gain as much as possible, and my aim was also कि भाई optional तो अच्छे से करना है, and optional is like I should be at least in top 5% of the entire competition that is giving that particular optional. Optional में इतना करके रखो. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने किस प्रोपोर्शन में ऑप्शनल को जीएस को
ऐसे को टाइम दिया? As I said, 70 days you have, let's say, divided into half, 35, 35. Plus 35, 80% to optional, 20% to your part, right? And then the next 35 days, just reverse it. 80% to, because you have done your optional those 35 days. And then just reverse it, 80%, 20% keep optional remaining because optional ethics, essay, which most of the people say, those are actually the key because you can score more than 60% marks in these particular subjects. So focus on optional. So even if after 35 days, keep the optional going. Maybe you can read a test, maybe a week. टेस्ट कुछ दे दो सैटरडे संडे आके एक क्या जाओ दो टेस्ट दे लो या फिर हाफ टेस्ट भी दे सकते हो. It doesn't matter if you are just given a 3 hour paper or even a 1 hour paper. What I practiced was for time management in the end. Uh, 1 hour, 7 questions. That's it. I used to practice 7 questions 1 hour, and it goes like 10 markers, 15 markers. So it was a mix of 3 plus 4, 4 plus 3. I don't remember exactly. But within 1 hour, if you are able to write 7 questions, उसमें भी time management test हो जाता है, and then for 3 hours. Good. मोर क्वेश्चन सर. सर ऐसी कौन सी चीज़ें थी क्वालिटी या फिर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी आप में थी जिससे आपको एज मिली दूसरों से ज़्यादा मार्क्स में? मुझ में कोई स्पेशलिटी नहीं थी. But yeah, I can say कि if I reflect back, what might have differentiated is that I wrote differentiated content first of all, because frankly I had done philosophy coaching from previous institute also before this, and I had seen the amount of content that I had before coming to this particular institute. I was in some kind of confidence कि मुझे decent आता है philosophy optional में. Okay, but then when I actually jumped into, and this is frankly I'm saying, when I actually jumped into the material जो यहाँ था VVR-IAS, then I actually thought कि कुछ नहीं आता अभी तो. I hadn't even started. बहुत बहुत मटेरियल था. एंड देन एक्चुअली आई फोकस्ड ऑन कंटेंट बिल्डिंग एंड दिस थिंग ओपनड अप. एक होता है कि आपका एप्टीट्यूड शेप हो गया. नाउ आई कुड गो ऑन टू स्टैनफोर्ड वेबसाइट और इग्नू रिसर्च पेपर मटेरियल, एंड देन आई कैन जस्ट फ्लिप द पेजेस, सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट, एक्सट्रैक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी. तो दैट एबिलिटी जो अमर्त्य सेन का पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, वो व्हाट अप्रोच, capability approach, yeah, that kind of thing I got from here. Previously I just had that content. अच्छा इसको रिवाइज करना है, इसको तो 10 पेजेस में कंसोलिडेट करके I just write it down, right? But the ability to extract content from different sources and then compile them and actually write them in answers, that I got from here, and that might have differentiated my answers. That's all I can say, because UPSC, you never know what Google it comes up with. So yeah, that's the thing. Any other questions? Yeah. Sir, does it really help to preparing GS4 along with philosophy? GS4, I think only the thinkers part. You might gain a particular aptitude towards that, कि थोड़ा सा उसकी तरफ thought process ऐसा हो जाता है कि you don't get bogged down by कि कौन सा thinker आ गया, अरे प्लेटो या रसल, कभी कभी किसी ने कुछ पूछ लिया तो you won't get bogged down by that. But I don't think theoretical essay part, yeah, that's a completely different approach in ethics. So people who have done maybe sociology or other humanities वाले optional, उनके पास भी उतना ही है जो जितना आपके पास edge है, मुझे लगता है. So it doesn't matter as much that ethics might get benefited due to philosophy or something. Prelims के पहले ही cover कर लेना चाहिए कि after the prelims also we can. Theoretical part I think कुछ cover कर लेना चाहिए, because if you are, it's a completely different subject in itself, and as I said, ethics, essay and optional, all 3 papers give you good enough marks, तो अच्छा scoring वो होते हैं. तो ethics में भी you should not completely leave that optional कि prelims और mains के बीच में ही पढ़ेंगे.
पहले एटलीस्ट आप थ्योरी पार्ट करके रख रहे हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स और ये जो वैल्यूज होते हैं उन सब का. इट ऑल्सो टेक्स टाइम. एथिक्स में what I did was I also made some good compilation of examples, lots of examples, and those examples you can't कि 10 दिन में नहीं आ जाएंगे. You have to compile them from for a very long time. So if you're started right now, prelim से पहले ही करना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे, it builds up. So पहले ही करो, it's much better. केस स्टडीज एंड ऑल यू कैन एक बार देख लेना. हो सकता है केस स्टडीज आप बाद में शुरू करो तो भी थ्योरी पार्ट तो is a socio-political philosophy. Are we free to substantiate with current examples? For example, secular state portion, hijab issue, paradigm, Bangalore vis-a-vis Iran issue. Bangalore vis-a-vis Iran. Okay, just an example. Okay, so yes, current examples definitely you put as much as possible for current affair, GS, जो आपको आपके अपने जनरल स्टडीज में आपने पढ़े हैं. एसए के प्रीवियस ईयर के एक बार सोशो पॉलिटिकल उसको उसमें कोड. Even socio-political philosophy previous year questions, if you see 30 years, there are many repetitive quotes that they have asked. So those quotes you can actually put in their answers. Not only practice them in answer writing, question का उसका आंसर लिख दिया, but उस quote को तो अब याद कर लिया ना आपने. Even ethics में whatever test series and all you are writing, you would be उसमें writing exam quotes के basis पे वो सारे quotes उठा लो. If you come across any case study or any particular current affairs wala always try to think them through your socio-political mindset also. I recall I did one thing. जो मेरा GS का material था, what I had consolidated, I had made one small register, कुछ 100 pages का register था. उसमें I had compiled everything up and उसको ही मैं प्रोसेस करता था. So just after GS4, you have 5 years of break, right? So just after GS4, what I did was I took that register again and then flipped the pages and saw what is important for my option, socio-political especially. What is important for my option? तो उसमें कुछ दिख रहे थे एसए के, whatever data, women का, social, society का mostly बहुत content आप data उठा सकते हो, graphs, pie charts, everything. Whatever I could think of कि this might be required, I took a different company. I would revise once again and I'll probably try to quote them in paper 2. तो वो definitely कर सकते हो. The only thing is what I feel that since it's a philosophy paper, try to be more logical argument देना उसका. Like in GS we just write data ये है, facts ये है, but उसके साथ साथ if you just substantiate by just one line, why have you quoted this data and what it shows actually, एक बार एक लाइन में और लिख दो. I think that might be helpful because फिर वो एकदम से बिल्कुल सेपरेटेड लगता है. इसमें डेटा ऐसे लिख साइड में, तो अगर उसको टेक्स्ट में just add a one liner, buffer line, whatever, that might be helpful. Any other question? So we can probably discuss a few questions from previous year. Sir. Yeah. सर जो भी टर्मिनोलॉजी है फिलोसफी में, तो उसके इंस्टेड हम अगर हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें अगर राइटिंग किए, I think if you write simple language तो कर सकते हो, but by terminology what do you mean? Like keywords? yeah. I think you should use keywords. Keywords use करने से एक एग्जामिनर को ये पता लगता है कि he is probably a philosophy graduate या ऑनर्स करा हुआ है इसने, या ये खाना पड़ेगा आपको किसी तरीके से. आपको लिख कर लगे कि इसने फिलोसफी पढ़ा है, ये 2 महीने कोचिंग करके नहीं आ गया है, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग दोज कीवर्ड्स और थोड़ा सा किसी थिंकर के बारे में 2-4 और थिंकर डालते तो इट इज हेल्पफुल. मैं एक चीज मेरे को जो लगती है, मैं 1-2 और लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेबस तो है, यू आर the syllabus, but if you are going a little bit around the syllabus also, it might be helpful.
because in philosophy, especially Western में, Indian में, uh, let's say Plato है, right? Plato के syllabus में I think there are two terms. और है ही नहीं, दो, बस आप सिर्फ और सिर्फ वो दो टर्म्स पढ़ोगे, बट क्वेश्चंस तो और भी रिलेटेड आ रहे हैं. एंड एवरी एक थिंकर, सिंस इट्स अ सेंट्रल द आइडिया, सब कुछ एमिनेट हो रहा है. If you study 2 or 3 more topics of that particular thinker, you can definitely relate to that particular theme. तो अगर क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है, आप दूसरे उसी थिंकर के दूसरे आइडिया से उसको जोड़ के उसमें लिख सकते हो. So if you are studying थोड़ा सा around the syllabus also, it might be helpful. Let's say Plato's idea of soul है, syllabus में कहीं नहीं है, but एक आंसर में आप कहीं एक लाइन लिख भी दो, and if you relate it with the syllabus or relate it with the question, context में लिखोगे of course, it might be helpful because you are adding one more dimension to it, which is good. तो अभी कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, मे बी उसमें भी as far as I remember, तो उस हिसाब से देखते हैं कि what all differentiated content maybe we can add. क्वेश्चन पेपर हमारे पास यहाँ पर भी है, ऑनलाइन भी है, और हाँ. इसमें let's say this might be a difficult question. 1D. What is अच्छा, have all of you covered the syllabus once? क्या कोई ऐसे भी हैं जिनको has read this particular part? Okay. Because I might go, मतलब मैं थोड़ा बेसिक्स के आगे ही थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा, तो okay. So question is, what is psychologism? Critically discuss the way Edmund Husserl avoids the problem of psychologism in the discourse of transcendental phenomenology. So Husserl and all this Hegel के बाद वाले हैं, especially a few thinkers, German thinkers, Husserl, Heidegger. इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ने की ज़रूरत है. एंड इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक दीज आर सम लो हैंगिंग फ्रूट्स. अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एज यू सेड टर्मिनोलॉजी, इफ यू यूज गुड कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजी, इट माइट बी हेल्पफुल हियर, बिकॉज still there are a lot of German terminologies or whatever, his own way of writing those keywords. Similar Heidegger में भी ऐसा ही है. So you can actually use those things. So yeah, so it's a 10 marker. So of course you can write the definition of psychologism, whatever he means. But here it says critically discuss the way Edmund Husserl avoids the problem of psychologism. Of हर कोई ये तो लिख देगा how he avoids the problem of psychologism, वो phenomenological bracketing करना है, ये करना है, वो करना है. But you have to critically discuss. और this is very important, that how do you come up with some criticisms. I think I might have written some page. I'll show you some page number. मैं कह रहा था थोड़ा सा अराउंड द स्पेक्ट्रम के थोड़े से एक्स्ट्रा डिफरेंशिएटेड कंटेंट व्हाट यू कैन ऐड इज, everybody can write psychologism क्या कहता है, it's a theoretical foundation that supplied by psychology. But what you can write is, if you know Brentano कौन था, how he come up with intentionality concept. Actually Husserl, he supported Brentano and he said psychologism is there. He said he wrote a book called Philosophy of Arithmetic, and he said
concept of number has come from psychological nature. But there was another important philosopher called Frege. His critique of arithmetic in numbers that led him to change his viewpoint, and then he came up with logical investigations where he refuted. So, if you just write this in one or two lines in the introduction, this might be a little helpful in maybe थोड़ा सा differentiated content लाने की, because ये वाला पेपर जो मुझे दिखा वो थोड़ा सा बेसिक्स पे ज़्यादा था, and if everyone is writing the same thing then you don't have the edge. So getting an edge is यहाँ से आप ला सकते हो. And the way he refuted ये तो I think you might be knowing these things कि maths and logic was the main thing जिसकी वजह से जिसको use करके he came up with some concepts like maths and logic are cannot be relative, they are absolute, so they cannot be psychological in nature. That is why psychology is not there. It is so arguments you can definitely read, and that is why he came up with phenomenological reduction to avoid psychologism. This is one part, and then the critical part. So for critical also I had written a 321. I am not going towards the content part because एक तो मुझे भी 3 साल हो गए हैं, दूसरा you might read that. This is the same thing. Husserl, like phenomenological, he said this, then Frege's criticism, and then he came up with the logical implications. He used math, logic, and this is how you say, not psychological. Okay, criticism part I might not have written here exactly, but major criticism was from existentialists who said bracketing कैसे कर सकते हो? Not possible. We exist in the world. How can you bracket the world? This part you can definitely say that his criticism of psychologism was also criticized. Where is the paper? Question paper back चाहिए. Next question. Has anybody attended this paper? This time? Okay. Any particular question you found difficult? Which has been? Okay, yeah. What is a perception according to Kant? Discuss with reference to its transcendental exploration of space and time. I was not aware with the term A perception. A perception majorly पता नहीं शायद शॉर्ट फॉर्म है अटेंटिव परसेप्शन. परसेप्शन तो इज लाइक मेरे दिमाग में बॉटल भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बट टुवर्ड्स व्हाट आई एम अटेंटिव, दैट इज ए परसेप्शन. तो मेजरली साइकोलॉजी में तो यही कहना होता है. एंड अकॉर्डिंग टू कांट ऑल्सो इट वाज दिस ओनली. लेट मी सी इफ आई हैव रिटन पेज नंबर. So he uses the term a perception to denote experience coming together in the transcendental unity of consciousness. According to Kant, what he said was whatever a perception मेरे हो रहे हैं, so it naturally presupposes that there is one consciousness which is having those a perceptions. So it's like a unity because मेरे जो a perceptions हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं synthesize हो रहे हैं, and those synthesis is being done by what? There is some consciousness. That's why I said
there is a transcendental unity of consciousness. There example भी है, you can quote this example directly in the exam. When seeing an elephant, one may see 4 legs, a trunk, 2 ears, body, tail, etc. That is a desperate set of components. To see them all as a whole elephant requires that there be a single unified observer, that is the transcendental self. So that was Kant's idea of a perception and synthetic unity of a perception. सर के नोट्स में भी था, as far as I remember, एक synthetic I forgot, but there is like three things: reproduction, intuition, reproduction, and then right. तो वो चीज भी आप you can quote unity of consciousness. That idea you have to quote, and space and time से relate करना था. Space and time से you can definitely say, because those are a priori transcendental elements के बिना perception ही नहीं हो सकता. Perception ही नहीं हो सकता, ये perception तो next thing है. So that was your answer. क्वेश्चन पेपर कहाँ से निकलता है? अच्छा, क्रोम में है. ओके, लेट्स गो टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 में the first question, this is, I think this might be tricky because everybody can quote proofs of Sankhya philosophy, Purusha के, but यहाँ लिखा है examine and evaluate. अब examine evaluation, if you want to quote some differentiated content, तो उसमें क्या करोगे? एक तो है सांख्य का, आप जनरल क्रिटिसिज्म तो लिख सकते हो, वो यू माइट हैव स्टडीड, बट इफ वही है कि इफ यू स्टार्ट रिसर्चिंग थिंग, कहीं से कुछ मिल गया, जस्ट एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ दैट. मेरे आई जस्ट शो, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, आई जस्ट शो कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो कंटेंट इफ यू वांट टू. ये भी पेज नंबर ये किसी बुक में था, एंड दिस वाज आई थिंक द बेस्ट सोर्स फॉर सांख्य के जितने भी आर्गुमेंट्स थे, उसके क्रिटिसिज्म्स बहुत ही अच्छे से मिला हुआ था, इसमें मिल गया था मुझे इसमें. सो या, और या, तो हाउ डू यू गो अबाउट द आंसर? इट सेज एग्जामिन एंड इवैल्यूएट सांख्य's आर्गुमेंट फॉर पुरुषा. तो पहले तो ब्रीफ में तुम्हें जल्दी से ये बताना पड़ेगा व्हाट आर सांख्य's आर्गुमेंट्स फॉर पुरुषा, एंड देन यू विल कम टू एग्जामिन इवैल्यूएशन. सो ब्रीफ में कैसे बताओगे? सो दिस थिंग आई आल्सो यूज्ड इन जीएस वाज इनलाइन नंबरिंग. एक पैराग्राफ है, उसमें इनलाइन नंबरिंग कर दिया, और ऊपर तुमने सबसे ऊपर सूत्र डाल दिया, इंडियन सूत्र डाल दिया कि सांख्य इन देयर 17th सांख्य कारिका, उसके अंदर पुरुषा के प्रूफ ऐसे दिए थे. जस्ट राइट दैट एंटायर सूत्र, एंड देन this means the spirit means Purusha. You can of course paraphrase according to you, but it says the spirit exists as a distinct form of matter, since these are all 5 proofs only. उसको बस इस ऐसे नंबरिंग करके लिखना है. You also write बहुत ही succinct way में खत्म कर दो. तो क्वेश्चन उस पे नहीं है, उसके आगे वाले पे है examine evaluation, and then here come examine evaluation. First 4 arguments seek to, तो ऐसे ही बता रहा है कि पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स को इसने कंबाइन कर दिया है इनटू टेलियोलॉजिकल, एंड द लास्ट वन को इसने कंबाइन कर दिया ऑन्टोलॉजिकल. वो ठीक है, बट दिस यू कैन कोट नाउ. प्रोफेसर डी वाडेकर in his article Sankhya Argument for Purusha, not the entire thing, just this, has taken great pains to show that Sankhya's arguments employed in the 7th Karika fail to prove the existence of pure Sankhya. और इसमें सारा डिटेल में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बट यू कैन डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट 5 पॉइंट्स आउट ऑफ इट. एक प्रूफ पे इन्होंने 2 पैराग्राफ लिखा है, उसमें बस एक लाइन यू जस्ट एक्सट्रैक्ट एंड जस्ट फिनिश ऑफ. नोट्स बना के इसको जस्ट शॉर्ट नोट्स बना के रख लो. एंड फॉर एवरी, इसमें आगे पुरुषा का भी है, प्रकृति का भी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेल्फ का भी है इसी सोर्स के अंदर. तो ये आपको कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म्स एंड एक्स्ट्रा कंटेंट, डिफरेंशिएटेड कंटेंट, दिस हैव टू टेक आउट. मेरे हिसाब से दिस वाज मोर देन इनफ फॉर एनीबडी टू, जो भी होता है ना क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें निकालने का, दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ अगर आप यही कर लो. वो पॉइंट वाइज मिल जाता है, तो
जरूरी है reference? ये नहीं मिलेगा शायद, आई डोंट थिंक ये मिलेगा आपको। कोचिंग मटेरियल, किसी कोचिंग मटेरियल में नहीं है ये। 95% तो at least, हाँ, 95% का खेल है ही नहीं। द गेम इज नॉट अबाउट दोज दैट 95%, एवरीबडी नोज दैट थिंग। यू हैव टू एक्चुअली गेन दैट 5% वाला नॉलेज कहीं कहीं से, दैट हैव टू डू ऑन योर ओन ओनली, बिकॉज दैट कंटेंट एवरीबडी नोज। द बेसिक्स पार्ट क्या जो है ना, इट्स एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, जीएस का है, एंड देन दे आर लेट्स से टीचिंग इंडियन सोसाइटी, एंड देयर इज अ टर्म इन इंडियन सोसाइटी, लेट्स से ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। ठीक है, वो हो सकता है मैं आधे घंटे में आपको पढ़ा के खत्म कर दूँ, सब पे नोट्स लिखवा दूँ आपको। एंड देन देयर इज अनदर कोचिंग इंस्टीट्यूट विच माइट टेक 10 days फॉर द सेम टॉपिक, एंड देन उसके अंदर वो लिखवा रहा है, राइट। यू ऑफ कोर्स आपको बैलेंस वर्ड पे करोगे, यू माइट फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे तो तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे आता है सारा। एज सुन एज यू सी दैट वो जिसने 10 क्लासेस करके आया है, उस पर एक बार आप नोट्स एक बार चेक करोगे, आपको लगेगा इतना सब कुछ था इसमें, आई डोंट इवन नो ये क्या क्या है। Of course, you will have to come to a middle ground somewhere. You can't attend a 20 class session somewhere, right? But you have to see the general crowd or competitive exam in the end. थोड़ा तो एज करना पड़ेगा, एवरेज पे नहीं टिकना है, एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाना ही जाना है। दैट यू हैव टू एंश्योर समहाउ। Right. आपने रेफरेंस बुक और जो सोर्सेस थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। In my only attempt in mains was this one only. Previous I only gave prelims. Prelims ही नहीं निकल रहा था, right? So this was the only mains that I gave, and previously my optional preparation was such that I relied only on the basic coaching वाले notes, previous coaching notes. तो उस वक्त I felt that this is probably enough. This is like I know सारा मेरा सिलेबस हो गया, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिलेबस होता है ना, छोटा सा हो गया। बट उसके बाद आई थॉट आई हैव टू डू अ लॉट इन दिस सब्जेक्ट, एंड दिस इज नॉट एंडिंग सून। ये है बड़ा सिलेबस, बड़ा है दिस। ये भी जब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, देन यू अंडरलाइन करके यू एक्सट्रैक्ट दोस थिंग्स। आप किसी दूसरे शायद ऑप्शन में जाओ, हो सकता है आपको एक बार में पढ़ना है, देन उसमें से आप 2 निकालो। बट वही फिलोसफी दिखने में शॉर्ट लग रहा है, बट यूल हैव टू थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज़ को। सर के जो पोस्ट क्लास नोट्स है उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे। पोस्ट क्लास, प्री क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा ऑफकोर्स, वो क्योंकि क्लास में भी हो जाता है और बस, बट पोस्ट क्लास को ऐसे ही था, मोस्टली बुक का ही मटेरियल है, तो कभी कभार तो रेपिटेटिव हो जाता था, अदरवाइज जस्ट एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ दैम। जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको लग रहा है ये अच्छा है। शॉर्ट नोट्स आई ट्राई टू मेक, बट आई कुडंट मेक फॉर ऑल ऑफ देम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मैंने उसी में मार्क कर लिया। इसमें देखोगे शायद कहीं कहीं हाइलाइटर पेन वगैरह बहुत चले हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन चले हैं, रेड पेन कहीं चला हुआ है, कहीं कुछ चला हुआ है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो वो यही है कि आई वाज एक्चुअली मार्किंग देम। एक कलर कोड भी बन गया था मेरा कि चलो ये मैं रेड से करूँगा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग ग्रीन पेन उठा लूँगा, थर्ड रीडिंग ब्लैक उठा लूँगा, देन हाइलाइटर उठा लूँगा। एक कलर कोड बन गया था, ये ऐसे कम करता जाऊँगा। दिस वाज द सेम केस इन प्रीलिम्स, जीएस वगैरह में सब मैं ऐसे ही कर रहा था, रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, एंड आई हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग अ पेन और समथिंग इन माय हैंड, उससे वो करने की। तो वो अलग अलग पेन से कर लो, सच दैट याद भी रहता है कि अच्छा आपने ये रिवाइज कर चुके हो, ज़्यादा ये रह गया है, दोबारा कर दो। कंसोलिडेट करना it was very tough for me, and I also thought it's quite a useless exercise because बहुत ही clerical job हो गया था। मैं बैठ के बस कंसोलिडेट ही कर रहा हूँ, 4 कुछ हैं उनको एक में कंप्लीट कर। इट वाज अ वेरी टाइम वेस्ट। आई ट्राइड टू डू दैट, बट मुझे लगा मैंने टाइम वेस्ट ही किया उसका। मोर देन कंसोलिडेशन, माइंड में कंसोलिडेट कर लो, उसको स्टेबल करके एक जस्ट अ बिग फोल्डर इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू जस्ट हैव टू फ्लिप द पेजेस। ठीक है, let's go to some other question. Any particular question that you found? कुछ ऐसा कुछ, बिकॉज ये मुझे डायरेक्ट लग रहे हैं,
ओनली थिंग इज कहीं कहीं क्रिटिकली एग्जामिन आ रहा है. इफ यू हैव स्टडीड द पर्टिकुलर सी डी शर्मा में, इंडियन फिलोसफी का तो सी डी शर्मा बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, ऑफ कोर्स है. एंड स्पेशली बुद्धिस्ट और वेदांत में तो इट्स अ ह्यूज लिटरेचर इन इटसेल्फ सी डी शर्मा बुक के अंदर. सो यू डोंट नीड टू गो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं. एक दो कंसेप्ट्स हैं जिसमें आई वेंट, लेट्स से वेदांत के अंदर मैंने कोई तो रिसर्च पेपर कहीं से पढ़ा था रिगार्डिंग अध्यास. अध्यास के कंसेप्ट थोड़ा मुझे ठीक से नहीं लगा था, तो वो उसमें है, मेरे नोट्स में है. अध्यास का पूरा एक 8-10 पेज का इग्नू का अच्छा मटेरियल था. तो दैट यू विल हैव टू गूगल करोगे तो अच्छा इग्नू एंड दिस यूनिवर्सिटी जो मटेरियल है विच एक्चुअली ऑनर्स पीपल और पीपल हु आर स्टडीइंग ग्रेजुएशन, तो उनको पढ़ी है वो चीज़. यू कैन ऑल्सो जस्ट हैव अ लुक एट देम. इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि यू कैन हैव अ लुक एट दोज मटेरियल एंड एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ देम. यही बोल रहा हूँ मैं, कवर टू कवर एक एक लाइन नहीं पढ़ा जा सकता. या 7D 7D critical explain Buddhist concept of Triratna and internal relation. Critically examine the consistency of Triratnas with the concept of no soul, Nairatmyavad. So वही मैं कह रहा हूँ, बुद्धिज्म का तो you will find in CD cinema critically examination. I don't remember the argument actually, but है बुद्धिज्म का क्रिटिकल वाले डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं क्रिटिसिज्म्स के. सो डायरेक्टली राइट है. ओनली थिंग इज जहाँ पर क्रिटिकली लिखा है या एग्जामिनेशन भी वर्ड लिखा है, उस पर बस आप ये मत फोकस करना कि वही टेक्स्ट लिख के आ जाओ. उसका एग्जामिनेशन एक्चुअली करना, एनालिसिस करना. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल वो पुरुषास वाला ही था, बिकॉज उसमें most of the people must have just written the proofs of Purusha, और में एक दो लाइन में होता है कि सांख्य को इसने रिजेक्ट किया है, that's all. But if you're actually evaluating each and every proof 5 point लिख के, that's the best examination analysis of anything. तो ऐसे ही इसके अंदर भी नैरात्म्यवाद का भी आपको वो मिल जाएगा. When you are actually writing the exam, there might be some questions जहाँ पे आपको नहीं है content. This might be a challenge. ये कंटेंट नहीं है, आप क्या करें. फॉर एग्जांपल 2019 में कहा गया था कि सेक्युलर स्टेट में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ थियोलॉजी, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था ना. लाइक सेक्युलर स्टेट में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ थियोलॉजी, उसमें क्या लिखे हम, राइट. सो आई रोट समथिंग एंड देन इन द एंड कुछ कंक्लूजन कर दिया, बट सिंस यू डोंट नो एनी कंटेंट, तो वो तो तुम काम चलाने वाला है. देयर वुड बी सम क्वेश्चन जिसमें आपको बस कुछ ना कुछ लिख के आना पड़ेगा, राइट. एंड दैट वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, सो यू कुडंट अवॉइड दैट. बट जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको पकड़ो, उनमें आप कीवर्ड, टर्मिनोलॉजी, सब चीज़ें डिफरेंशिएटेड कुछ चीज़ें लगाकर एटलीस्ट कैच देम, उसमें अच्छे स्कोर करने की कोशिश करो. विच आर ऑलरेडी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. कंपटीशन है, एंड में यही याद रखना है, सबके लिए डिफिकल्ट है. तो आप भी वो सबको काम चला के थोड़ा बहुत, इफ़ यू हैव समथिंग कभी चल गया अच्छा तो ठीक है, उसको रहने दो वहीं पे. बट लिटरली अगर क्वेश्चन आ गया कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे बताओ, उसमें तो आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए. उसमें यू शुड एक्चुअली स्कोर हाई. इट शुड बी डिफरेंशिएटेड. ये मैंने सुना. Yes, what I had in mind was कि इंडियन करूँगा ज़्यादा. तो क्वेश्चन इस ढंग से आए थे that I could do इंडियन, बट ऐसा मतलब ये नहीं था माइंडसेट कि इंडियन ही इंडियन करना. Many people go with that mindset कि मैं इंडियन ही ज़्यादा करूँगा और इसमें सोशो पॉलिटिकल रिलीजन ज़्यादा करूँगा. वो मैं उस माइंडसेट से गया नहीं था. एक माइंड में था कि इफ़ लेट से बिल्कुल 50-50 आ गया ऑन द डिफिकल्टी लेवल, आई चूज इंडियन पार्ट, because I thought I had much more differentiated content in Indian part than other. That was my only criteria, differentiated content. So, for example, in paper 2, what I had in mind was religion karunga. But religion के questions, when I was initially flipping through the paper, then I thought religion थोड़ा सा difficult आया. I switched to socio-political. But what I had in mind was religion ज़्यादा करूँगा. But then I had to switch to socio-political. तो situation के हिसाब से you will change. But हाँ, Indian करा था. सर सबसे ज़्यादा
मार्क्स स्विचिंग टॉपिक्स कौन से हैं? No idea. Marks fetching topics, so I no idea because सबका वो है, इसमें आपके पास कंटेंट है अच्छा, कंटेंट इज द किंग भाई, कंटेंट एंड देन probably second presentation, आप कैसे, how are you actually presenting it, that might be a second factor, but जिसमें आपके पास अच्छा कंटेंट है, that is a marks fetching topic. So एक ही टॉपिक पे आई कैन आस्क टू डिफरेंट क्वेश्चंस, वन माइट बी वेरी डिफिकल्ट जिसपे आपके पास कंटेंट ना हो, और एक ही टॉपिक पे आई कैन आल्सो आस्क अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट टाइप क्वेश्चन जिसमें आपके पास भर भर के कंटेंट, क्योंकि पेजेस भी कम पड़ जाते हैं कभी कभार, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इतनी सारी चीजें, हाउ डू यू कंसोलिडेट इन 2 पेजेस और 3 पेजेस. एक था 20 मार्कर व्हिच आई हैड आस्क्ड लाइक 4 पार्ट, बहुत सारे से पूछते थे पेपर मार्कर. कहीं होगा but there are questions like this also where you have like 4-5 parts और वो है 15-20 मार्कर ही. अगर 20 मार्कर में भी if you are dividing it into 5 parts, तो you just write the normal content which everyone has. Where is the space to write that differentiated thing that you probably had written for long? एक वो भी ऐसे आ सकते हैं. Then you'll have to somehow, इसी में प्रैक्टिस काम आता है, इसी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आ रहा है कि आप कैसे छोटा करके उसको लिख रहे हो, कंसोलिडेट करके, so that you have space to write your content, the differentiated thing that you had prepared. For example, I told you about that inline numbering, right? एक पैराग्राफ में अपने सारे करके खत्म करें, because that was not the main part of the question. That was an introduction kind of thing. Main part was criticism and evaluation. So that kind of thing you can do even in GS. Ethics में मुझे लगता था कि it was very helpful because उसमें एक ही पेज दिया होता है, 10 मार्कर कर दो या whatever, you have to write a very crisp answer for that. So in that you can utilize shortening somehow, किस तरह shorten कर सकते हैं इसमें. Okay. Before फिर देखते हैं एक बार. Socio-political is something where you actually have to brainstorm your every topic. जितना brainstorm करोगे उतना अच्छा है, and अगर syllabus को लेके brainstorm करोगे that's much more beneficial. Like take the entire sovereignty, equality, justice, liberty, ये उस पे एक एक topic पे brainstorm करो. Even अभी बैठे you can actually make groups and just discuss this thing. बहुत आराम से पॉइंट्स बनते हैं, ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं होता है. ओनली थिंग इज एवरीबडी वुड कम अप विद डिफरेंट आंसर्स. दैट इज व्हाई व्हाट आई हैड इन माइंड कि सोशियो पॉलिटिकल नहीं करूँगा, बिकॉज सबका ही डिफरेंशिएटेड है. देयर इज माई एज ओवर दैट. दैट इज व्हाई आई चूज रिलीजन की उसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, उसी में लोग लिखते हैं, बट उसमें मेरे पास अच्छा कंटेंट है. दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैड कि आई हैव डिफरेंट कंटेंट. सो for example, this can even come in an essay, right? Is corruption a systemic issue or an ethical issue? Critical comment. अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, how will you answer this thing? अभी brainstorm करोगे, अभी just think for उधर it might take time. उधर तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको जल्दी लिखना है. बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ऐसी इवैल्यूएशन करोगे, आप बैठ के अगर डिस्कस करो सिस्टमिक क्या होता है, एथिकल क्या होता है, सारे सिलेबस से शुरू हो जाओ, सॉलिडिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, कम अप विद 4 पॉइंट्स ईच. दैट्स इट. सो इसको सोशो पॉलिटिकल में मोस्टली ऐसे ही रहता है. ओनली वन थिंग दैट आई सेड वाज, अगर डेटा और फैक्ट्स व्हाटएवर यू आर कोटिंग, just write 1 or 2 more lines on how is it relating to your argument. And another differentiated thing that you can add in socio-political is add thinkers. अगर thinkers, कोई भी philosopher, कोई PSIR के पोस्ट उठा लो एक बार वहाँ से नजर मार लो, उसमें से जो कुछ अलग लोग दिखते हैं ना, वो कोट कर दो. तो that you can, हाँ बोलिए. करंट स्कॉलर हाउस मतलब बिल्कुल ही पॉलिटिकल फिगर मत डाल देना, बट हाँ करंट स्कॉलर्स भी डाल देना, बुक कोट करके डाल दो. हाँ दिस आर गुड ऑथर्स. कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई नोबेल प्राइज विनर है रिसेंट में, कोई ऐसा है, तो डाल सकते हो.
बिकॉज दीज आर एस्टैब्लिश्ड लोग, उनका आप देखते हो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड इट्स डिसेंट बिकॉज जो पीपल पीपल हु आर चेकिंग दिस थिंग मोस्ट प्रोबेबली वो अकेडमी से हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे वुड नो दोज पीपल। वो होगा इतना कि उनका, अगर आप कोई न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं ना, जरा सोशियोलॉजी के कुछ अलग अलग स्टॉलवर्ड्स हैं, बल्कि वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, कैन कोट देम डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेक्युलरिज्म पे एक लिखते हैं राजीव, राजीव भार्गव, या सेक्युलरिज्म इन सब पे तो आई थिंक बहुत पहले से फिलोसफी ऑप्शन वाले लिखते आ रहे हैं बच्चे, राजीव भार्गव को कोट कर देते हैं, करता है, ये लॉट ऑफ बुक्स ऑन, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसे यू कैन डेफिनेटली कोट करंट ऑथर्स, थिंकर्स और प्रीवियस थिंकर्स, एनीबॉडी। तो सबसे डिफरेंशिएटेड जो पार्ट मुझे लगा वो आपकी लिखने की स्टाइल, फोनेटिक लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते थे। तो सर आपने वो एसे में और GS4 में इस्तेमाल की पेपर में? फोनेटिक लैंग्वेज इन द सेंस जैसे हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड्स, एग्जैक्टली संस्कृत वर्ड, जैसे सेंटेंस आप ओके। अच्छा, पेपर 1 में अब मैं समझ गया, जैसे इंडियन में होता है मोस्टली, राइट? हाँ, exactly. जैसे अनुमान के ऊपर, ए के ऊपर वो है, वो सर ने ही सिखाया है। एंड ऐसे में एथिक्स में यू कैन बी, वेयर विल यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइट देम, मतलब इफ यू वांट टू कोट देम तो कर दो, बट एथिक्स में एक या दो वर्ड आप लिखोगे, लिख दो, आई डोंट नो कितना फर्क पड़ेगा उससे, बट आई थिंक दिस इज गुड हैबिट। वन इम्पॉर्टेंट रीजन इज यूपीएससी खुद लिख रहा है, यूपीएससी खुद तो क्वेश्चन पेपर में आपको मार्क करके दे रहा है ना उसी ढंग से, सो यू कैन ऑल्सो राइट। बहुत मुश्किल नहीं है, राइट? आई थिंक इतना तो मुश्किल मुझे नहीं लगा। शुरू में स्पीड कम हो जाती है, बट इन द एंड इफ यू राइटिंग में 4-5 बार लिखोगे, तो क्लास के टाइम ही लिखने लग गए थे तो आदत ही बन गई थी उसकी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। I think this is a good exercise. This also was a differentiating factor for me कि मैं ऐसे ही लिखता था, इसलिए इंडियन करना might be helpful, और रिलीजन में भी इंडियन टर्म्स जो है। Critically evaluate Gandhi's views on eradication of caste discrimination. अब ये आप मटेरियल, आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन यू कैन कहीं से जस्ट गूगल देम आउट, एक एक का जो थिंकर्स है ना उनका कहीं से, खास तौर पे गांधी एंड अम्बेडकर, वो लास्ट वाले जो पार्ट्स हैं उनका आप, क्योंकि उनका बहुत मटेरियल मिलता है एंड जनरेट टू एवरीथिंग। ये तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट सिलेबस से पूछ लिया, कभी कभार ऊपर वाले पार्ट्स में पूछ लेता है, क्योंकि बोलता है गांधी जी के व्यूज बताइए ऊपर, जैसे कि गांधी जी पे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था सिलेबस में, ये कहाँ से आ गया। सो गांधी जी है ना कि अम्बेडकर के बाकी सारे टॉपिक के व्यूज भी एक बार नजर मारो, बस एक एक दो लाइन ही आपको, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, उसके बाद यू राइट इट डाउन, इतना कोई वो मुश्किल नहीं है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इट माइट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज गांधी जी को हम जनरली कैसे क्रिटिसिज्म वाला हो जाता है थोड़ा सा करें, बट आप थिंकर्स को कोट करके यू कैन डेफिनेटली, खुद से तो कभी मत कर, थिंकर्स को कोट करके या अम्बेडकर को ही स्पेशली कोट करके यू कैन से, इनके तो गांधी अम्बेडकर डिबेट है ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, डेफिनेटली राइट दैट थिंग। ऑल्सो वेरी, आई थिंक ये तो एथिक्स GS4 में भी आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट होती है नहीं होती है, देख for example this question, this might be a generic question, gender as a cultural category as opposed to sex as a biological category. Everybody can write on this, but if you are writing in a philosophy paper, if you can quote 2 or 3 gender जो authors होते हैं उनको, and second syllabus में चले जाओ, sovereignty से तो I don't think कैसे करोगे, but equality, liberty, justice, rights, duties, उन सब से relate करो, जेंडर जस्टिस, जेंडर लिबर्टी, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर राइट्स, सब चीज़ उससे जुड़ जाएगी। एक जस्ट सिलेबस लो, उससे रिलेट करो एंड जस्ट राइट इट।
that might be a good thing. Dimensions generate करनी है मेरे लिए, dimension generate करने के लिए syllabus is a very good thing है. These are direct questions. Spinoza, morality without religion, religion without morality. In topics पे religion में हाँ, I would say there are 2-3 topics like that. Morality and religion, then syllabus के ध्यान है. ऐसे 2-3 topics हैं. उस पे अच्छे से वो बना लीजिए. Like 4 combinations बनेंगे. Morality without religion, religion without morality, just religion. तो ऐसे ये 4 कॉम्बिनेशन बन के चारों के अगर आर्गुमेंट किसी तरीके से आप कंसोलिडेट कर सको, दैट्स मच बेटर. कि कोई भी आ जाए, यू कैन जस्ट राइट दैट. इसमें पूछा मोरालिटी विदाउट रिलीजन, ओनली मोरालिटी. रिलीजन विदाउट मोरालिटी, दिस इज अनदर कैटेगरी. तो उसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. देन देयर आर लाइक कि मोरालिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मोरालिटी. ऐसे देयर आर some 5-6 combinations. तो उन सारे combinations में just find some thinkers or people who support this or oppose this. तो वो बना के रख लो material. Very helpful. Also, जो लास्ट वाला पार्ट है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइन ऑफ द सिलेबस, कॉग्निटिव एनकाउंटर. इसको बहुत अच्छे से करना. पीपल जनरली रिजेक्ट दिस थिंग. सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन दीज पार्ट्स, कंपटीशन वाली चीज़ है, वो लोगों को नहीं आता ज़्यादा, आपको ज़्यादा आता है. यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू हैव मच मोर कंटेंट ऑन दिस, स्कोरिंग करना है बस मेरे लिए, कुछ नहीं करना. This is also a very big question, 20 marker. So you have to do your critical exposition of different arguments by Thomas Aquinas. First you have to write 5 arguments, critical exposition भी करना है. And then this kind of question sometimes come which you find philosophically most interesting. You reason in support of your answer. I think इसके अंदर it's just a way to say किसी एक को explain करना. उन्होंने बस ये बोल दिया कि which one is philosophically more interesting. Any argument you pick, just give some good argument in support of that. कि some people have even supported argument. क्योंकि Aquinas का तो पूरा हर एक argument पे there have been series. अभी तक कुछ लोग हैं जो argument को support करते हैं और reject करते हैं. So जो support करते हैं उनके 2-4 argument, 2-4 thinkers को quote कर दो. इस particular Thomas Aquinas के ये वाले लेट्स से ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, ऑन्टोलॉजिकल बनेगी सॉरी, तो लेट्स से कॉस्मोलॉजिकल वाला कोई आर्गुमेंट है, उसके अंदर जस्ट कि ये पर्टिकुलर थिंकर्स भी आज तक सपोर्ट करते हैं एंड दे हैव रिजेक्टेड द व्यूज ऑफ पीपल हु हैव क्रिटिसाइज्ड हिज आर्गुमेंट्स. तो दैट वुड बी योर थिंग. यू वोंट, आप कहीं से आर्गुमेंट्स तो कहाँ से लाओगे फिलोसॉफिकल, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कोट अदर पीपल एंड जैसे this is related. This could have been paper 1 question also, Ramanujacharya, God and Self का वो. It has come in religion part. कहीं से religion वाला concept भी अगर if you can add, मतलब सीधा God पे ही है, but इसके अंदर philosophy of religion वाला अगर आप कहीं से कुछ डाल सकते हो, तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि आप डाल पाओगे. But if you can just keep in mind, this is just a way कि कोई ऐसा question आ गया which is supposed to come in paper 1, which has come in paper 2, and if you can relate any concept or any idea which is specific to paper 2, write that line as well. paper 2 वाली चीज़ भी लिखो, उसके अंदर लगे कि paper religion वाला part में लिखो उसको. William James, this is also important. William James पे I found a lot of content on IGNU पे ही religion philosophy पे बहुत content है. I couldn't read that. Frankly, I couldn't read that. That's why मैं भी नहीं डाला. But I had taken a print out पढ़ने बैठा था. It was very difficult.
छोड़ दिया, उसमें से 2-3 लाइन उठाई थी, बस उसको मैंने रख दिया था। बट इफ़ यू वांट टू जस्ट ऐसे ही 3-4-5-6 लाइनें उठा लो कहीं-कहीं से, वाई विलियम जेम्स, बिकॉज वही है कि 2-3 थिंकर्स अगर वो इग्नू के मटेरियल में पूरा 2 चैप्टर है उस पे, सो इट माइट बी इम्पोर्टेंट, राइट? एटलीस्ट इग्नू वाला मटेरियल हर एक का देख लो, नजर मार लो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, दे आर मेकिंग अ फुल चैप्टर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इन रिलीजन फिलोसफी, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। विलियम जेम्स इज आल्सो, okay, I think if you have any doubts या कुछ ऐसा कुछ है तो we can discuss. हाँ हाँ हाँ, अगर ज़्यादा ऊपर तो मत जाओ, तो ज़्यादा हो जाएगा। Just that. I think एक ऑप्शनल में वट इन एनी ऑप्शनल व्हाट दे आर आस्किंग इज कि आपके पास ऑनर्स लेवल तक का नॉलेज हो जाना चाहिए किसी हद तक। ऑफ कोर्स लिमिटेड टू द सिलेबस, बट उतना नॉलेज भी है, बहुत है, ज़्यादा है। सो उससे ऊपर जाने का तो इट डजंट मेक सेंस। पीपल हैव डन पीएचडी ऑन पर्टिकुलर थिंकर्स, वो तो आपको नहीं करना। जस्ट एटलीस्ट ग्रेजुएशन वाला मटेरियल तो विल हैव, यू शुड हैव अ लुक। ओके, एनी अदर डाउट्स एंड एनीथिंग? कुछ ऑनलाइन है क्या डाउट्स? ओके, did you read the books alongside post class? Yes, I tried to read a few books. CD Sharma, ओपी गौबा तो सच मस्ट रीड है, ओपी गौबा तो एक बार पढ़ ही लेना। बट पोस्ट क्लास में ज़्यादातर ये था कि ज़्यादातर बुक का ही मटेरियल था, सो वो रिपीटेटिव हो गया था। ऑफ कोर्स जहाँ रिपीटेटिव है स्किप दैट, बट बुक्स हैं तो आई रेड थोड़ा तो देखिए। For contemporary, did you come across any standard books? Complete contemporary का एक किताब तो नहीं मिला. That is why online resources are the best for contemporary. Of course, क्लास मटेरियल के अलावा बता रहा हूँ, स्टैनफोर्ड IEP जो है एक इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, दैट इज़ वेरी गुड, एंड देयर वर मेनी यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें ना उसमें है, दैट PPT थी ना, उसमें एक एक उसका पेपर का सोर्स सब कुछ है, कहाँ से क्या है, जस्ट पे नज़र मार लेना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप करने बैठोगे इट माइट लुक कि ये इतना सारा कहाँ से आ गया, बट इट्स जस्ट दैट धीरे धीरे ही बिल्डअप हुआ है। हाँ, last one. Resources. So, yeah, there are lots of YouTube channels also that I use. NPTL, Stanford, IEP are two very good sources for contemporary. And ये तो मतलब टाइम पास करने के लिए, इफ यू कम अक्रॉस 1 or 2 गुड आर्गुमेंट्स, तो ये छोटे छोटे चैनल्स हैं, बट some are good, really good. Philo Notes is a very good channel, and Eric Dodson is also a very good channel. 10 मिनट में आपको एक पूरा थिंकर, I even made notes of that. Books, I tried to find books, कुछ ठीक सी मिली नहीं, ई बुक्स वगैरह बहुत ढूंढा मैंने, एक पर्टिकुलर ई बुक तो नहीं मिलती है। Can you please elaborate with an example how to differentiate your answer in easy questions like theory of form? Yeah, तो मतलब okay, we'll see that. एक बार sources देख लो आप, any doubt on any source और किसको इसको कैसे cover करें। हाँ, that book's name is this, दया कृष्णा। That जो भी मैंने पुरुषा का जितना वो दिखाया था ना proof वाला, वो ये book है। ये book कहीं से मुझे मिली थी, I just extracted that particular thing from that book. बहुत मोटी किताब है। Any doubt on any source बता देना। ठीक है, sources तो these were the same. Yeah.
थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कोई कह रहा था कि डिफरेंशिएटेड कंटेंट, हाउ डू वी गेट दैट? वी गो टू प्लेटो, तो शुरुआत नहीं होगा. Lot of content on Plato and all this. ये भी मैंने डायग्राम प्रैक्टिस करके गया था. 2019 में आ ही गया क्वेश्चन, सो आई हैड प्रैक्टिस दिस, तो ऐसे कैसे बना दिया ऑन केव एंड ऑल जी. या सो यहाँ से थ्योरी ऑफ आइडियाज शुरू होता है. ये मैंने जैसे आई कैन जस्ट टेल यू, दिस इज वन अटेम्प्ट ऑट कंसोलिडेटिंग ऑल द नोट्स. सो आई ट्राइड प्लेटो से शुरू किया था, कंसोलिडेट कर लेते हैं. तो आई इस तरह कुछ पेपर्स मिले थे. दिस इज कॉर्नल को फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग होता है कि इस तरह बनाओ. तो आई ट्राइड टू डू दैट ऑल्सो. लिखा, फिर ये लिख के मुझे समझ आया, ये लिख तो दिया बट इट्स लाइक आंसर्स में बैठता नहीं है. इफ आई जस्ट राइट एन इंट्रोडक्शन, सो आई थॉट इसको काट के आई राइट इंट्रोडक्शन लाइक दिस. तो वो अपडेशन होता ही रहता है. सो आई थॉट इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड दिस थिंग. थ्योरी ऑफ आइडियाज में लेट्स से ऑफ कोर्स यू विल से कि थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है. वर्ल्ड व्यू दैट फिजिकल सेंसुअल वर्ल्ड इज नॉट रियल और ट्रू एब्सोल्यूट बट ओनली टाइमलेस एब्सोल्यूट आइडियाज. ये तो चलो आप हर कोई बोल देगा, बट what can you come with differentiated content is that, let's say, the sensuous perceptual world cannot be the source of knowledge as was propounded by sophists. Knowledge, who said knowledge is perception. अब ये sophist वाला concept ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हो. So if you're writing कि how he came across और कैसे उसने sophist का criticism करके यहाँ पे आया and how he differentiated with knowledge and perception, और फिर so these are some small things that you can add. फिर उसके बाद you can also write the book names. उसने रिपब्लिक में क्या कहा, उसने क्या कहा, बुक में क्या कहा. So these are some examples here. Differentiate. Another examples. For example, यहाँ कह रहा है Plato has denied the existence of physical world absolutely. It is not relatively less real. It is only relatively less real, the physical world. For example, just like a lower staircase appears to be lower only after ascending to the higher one. Very small example, but if you're writing that, ये शायद post class में होगा, जहाँ तक है. So very small example, but if you're quoting that example, थोड़ा अलग content हो जाता है. बाकी सबका सीखी content होगा. So there are these are 2-3 ways. और कोई doubt तो नहीं है. अच्छा आगे. For religion, how did you generate content? Same way, IGNOU and paper one, religion, all 3 parts are similar कि उसमें आप content कहीं से ढूंढ रहे हो, ये सब कर रहे हो. Socio political में you have to brainstorm on your own. Just that thinkers को you can find somewhere. इसके thinkers कहाँ हैं, Google them. Wikipedia is a very good source for socio political. Socialism type करिए, Wikipedia का socialism वाला page is a huge page. और इतने सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग थिंकर्स हैं. सिमिलरली मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोक्रेसी, एनीथिंग यू विल फाइंड. एक बार विकी को ही ढूंढ लो, पुट कर लो, बहुत सारा कंटेंट है. By what time should we finish our optional preparation before prelims? This depends on per individual to individual. किसी को prelims के लिए 3 महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, किसी को 5 महीने चाहिए. So this I can't say. This depends on individual to individual कैसा है. बट एक रीडिंग कर लो, एटलीस्ट एक रीडिंग कर लो प्रीलिम से पहले, तो नेसेसरी है. आई थिंक दैट इज इट. देन एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, यू कैन आस्क और यू कैन एंड दिस सेशन. यस, बोलो. हाँ. While you were preparing in the first 2 attempts when your pre didn't qualify, and then I also read what Anuj sir wrote about you. This whole exercise which you did all by yourself, well, definitely sir helped a lot. But most of the reading which you did, this was done by you during what time? Like, I just want to know how much time did it take to do all of this, and should we do it? Because it's already most of this has already been compiled. I do understand that when we try to incorporate all of this, it would take much effort, because I have not put in that effort to read all those things and understand and then
right, it would look a bit mechanical. So would you recommend us to go through the material all by ourselves and then try to do it, or? So first of all, I think prelims 2018 was in May 31st. ठीक है, उसके बाद I tried to do on my own. अब मेंस का भी करना है, जैसे ये कर रहा हूँ तो जीएस का भी तो साथ साथ चल रहा है, जीएस का भी आई एम गोइंग माय ओन. सो आई थिंक आई स्टार्टेड इन दिसंबर 2018. आपको याद है कैसे 2018 दिसंबर 2018 के टाइम होता है दिसंबर. सो इट टुक 3 months, 3 to December, January, Feb, I think March तक खत्म हो गया था classes. So at that time also I was trying to consolidate everything. I had done my preparation on my own, some of it. Like इससे पहले I had done one coaching वाले notes तो थे ही. I had seen all NPTEL वाला जो वीडियोस है वो उसके नोट्स वगैरह बना लिए थे. कुछ हैं कंटेम्प्रेरी वाले में जाओगे तो वो NPTEL के नोट्स हैं उसमें. आई विल शो कंटेम्प्रेरी वाले कौन से नोट्स हैं. वो थिंकर वाइज आई हैड डिवाइडेड. तो these are all NPTEL वाला नोट्स. NPTEL एंड अदर कोचिंग मटेरियल सबका मिला के वो मैंने नोट्स बनाए थे कुछ. तो ये सब मिक्स्ड है एक साथ. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ क्लासेस कर रहा हूँ तो उसके नोट्स भी कंबाइन हो गए. उसका प्री क्लास आ गया, पोस्ट क्लास आ गया. सो ऑल दोज थिंग्स केप्ट कमिंग ऑन. सो धीरे धीरे एक फोल्डर में बनता गया. बट ओनली थिंग इज आई हैड टू समहाउ आई ऑर्गेनाइज देम इनटू फोल्डर्स. लाइक वेस्टर्न के 2 हो गए थे एज जैसे पीडीएफ में उसी तरह से फोल्डर्स था. और उसी में एवरी थिंकर का एक बाइंडर क्लिप लगा कर मैंने लगा लिया था. पेज फार्दर वट एवर, एक every thinker has one compiled thing, and I have just flipped the pages. कहीं से कुछ मार्क किया, हाईलाइट चलाया, अलग. You see so many different color pens. तो वही है कि I kept revising. कुछ मुझे कंटेंट लग रहा था जैसे now not useful at all. Either it has become very basic for me, और कुछ गलत ही लिख दिया मैंने, तो I just discarded them off. But most of it was here only. कहीं बस कटिंग हो जाती थी. जैसे this concept of saying and showing was completely wrong according to me. जब मैंने बाद में पढ़ा मैंने सब काट लिया इसको. Then I made another ये रहा saying and showing. बाद में अलग दूसरे नोट्स बनाए. So ये अपडेशन होता है, प्रोसेस है आपका सबका. And the thing that you are saying कि should you make those efforts, I think you would also make those efforts, but वो थोड़ा कम हो जाएगा because you have one compilation that you can read on. Of course आप सब कुछ नहीं पढ़ सकोगे because my writing you might not be able to understand, or the way I have compiled थोड़ा मुश्किल हो सकता है. But at least you can have an idea कि ये यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है. At least the printed forms जो है, printed वाला material है. और ये this is तो क्या writing है. But these printed forms you can have a look. इग्नू वाला है. You don't have to spend days and days on searching the material कि ये कहाँ से ढूंढूं मैं. That time can be reduced, but of course it will take time on reading them, consolidating in your mind, and probably you will find some other line good for you. ऐसा नहीं है जो मुझे एक लाइन मैंने अंडरलाइन करी, आपको हो सकता है आपको उसकी ऊपर वाली लाइन ज़्यादा यूजफुल लगे. That is your complete wish कि आप कैसे उसको लेके जाते हो. बट इतना एफर्ट कंसोलिडेशन और वो सब आपको करना पड़ेगा because your own notes, let's say you have your own copy, right? आपको भी तो लोगे उसको, और आपने पहले जो पढ़ा है आप उसको भी कंपाइल करो. दिस इज जस्ट अनदर वन मोर सोर्स फॉर यू, बट अ बिग सोर्स आई कैन से. बहुत ज़्यादा है. हाँ, VVR-IAS. अच्छा. Okay, good question. See, this was a personal choice for me, and frankly speaking, I relatively preferred IFS, Foreign Service, because of my own upbringing and nature. Because मैं दिल्ली में ही रहा हूँ. I have been in Delhi and I am not so connected to the IAS part of that. And second thing, service में भी practically speaking, the cadre-based system and all these things, this I particularly feel कि ये इतना मुझे ठीक नहीं लगता. Foreign service में ये चीज़ नहीं है. Foreign service में even if I have a one particular language, I am not restricted to one particular language area. That kind of flexibility is there.
regarding transfers and all those things, that is also not there. काफी उस हिसाब से stable रहता है. Of course आपकी posting change होती है one country to another, but it's not like कि अगले हफ्ते सामान लेके जाना है आपको, posting change transfer हुई है आपकी. At least I am there for 3 years. जहाँ posting है तो 3 years के लिए मैं वहीं पर हूँ. So very practical and small thing that I had in mind. That is why. There is, of course, एक बड़ा reason है कि that you want to have a global exposure, diversity, all this. These are good answers for an interview also. ठीक है? That is, of course, but एक है practical वाले reasons भी हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि this service for me is much better. Let's say if I am posted outside, my entire family stays in Delhi and all of them stay in Delhi. तो अगर मुझे आना भी है, so I just land at Delhi airport and just come. आधे घंटे में I'll be at home. ऐसा इतना मुश्किल नहीं है. Many people are afraid of foreign service. One reason is also because they say कि Indian बाहर posting में बाहर नहीं जाना. You can definitely manage all those things. Perks, benefit, everything. That is also very good in this particular service. I have batchmates of mine जिनकी सिर्फ और सिर्फ preference Indian foreign service थी. तेरा खाली छोटा सपना है. सही कहते ये नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे. There are people like that also. So you have to see on your personal basis if it is suitable for you or not. मेरा all India services से IAS and IPS से personally I did not think I would fit on those services. So I thought foreign service is much better for me. Anything else? Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Himanshu. Thank you so much to make the time useful for my students. And I think you all have got, you all have benefited from this session. And thank you to all of you for joining us online, offline. Thank you so much.